इंडिया सऊदी अरेबिया, सॉरी इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए का आपको मिला है क्या? सिर्फ जापान का मिला है, ठीक है। तो मैंने जो प्रिपेयर किया वो इंडिया चाइना का प्रिपेयर किया है गाइस, इंडिया चाइना का प्रिपेयर किया और करा है इंडिया व्हाट एल्स वी हैव डन रशिया, ठीक है। उसका जो उसके लिए गया हुआ अलाइनमेंट के लिए, एंड आई थिंक बाय 11 आई विल गेट, अगर इसी क्लास में मिल जाता है तो आई विल शेयर विद यू ऑल। हाँ बस थोड़ा सा थोड़ी देर में करते हैं, ठीक ठीक है। एंड योर टेस्ट पेपर्स हैज आल्सो बीन चेक्ड, किस किस के टेस्ट पेपर्स थे? किसी बच्चे के थे, भूमिका, हाँ, तो टेल हर शी हैज नॉट कम टुडे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। यू आर न्यू इन द क्लास, यू आर न्यू इन द क्लास, आप पहले आए हो? आप मेरी इंटायर क्लास में ही आए, मतलब इंटायर ड्यूरेशन में ही आए अगस्त से, है ना? हाँ ओके, आपको समझ आएगा इसे बीच में आप आए हो आफ्टर 3 मंथ्स? हाँ ठीक है, वैसे भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंडिया सऊदी अरेबिया के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, फॉर द पीपीटी ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया मैं यही रेफर कर रही हूँ, आई एम नॉट मेड अ न्यू पीपीटी टुडे, आई मेक फॉर स्पेसिफिकली इंडिया सऊदी अरेबिया, आई वर्क ऑन दैट, इट टेक्स 2 or 2.5 hours टू स्टडी, एंड जो भी नया, जो भी आई वांट यू टू गिव द अपडेटेड डेटास, ओके। सो एवरी टाइम आई हैव गिवन यू द पीपीटी रिलेटेड टू जो आपका अपडेटेड डेटाज हैं, जैसे करंट अफेयर्स है या फिर क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, हमेशा आई डू दैट। तो टुडे आई विल वर्क ऑन इट 2.5 hours, राइट, एंड देन आई विल प्रिपेयर एंड गिव इट टू यू डे आफ्टर टुमारो, देन नो प्रॉब्लम। अब ये एरिया आप स्टडी करेंगे एंड यू लेट मी नो क्या है ये, जस्ट स्टडी दिस एंड लेट मी नो व्हाट इट इज। Yes. What can you study from here? पहले बताओ। I know household things going on सबके घर पे, right? दिवाली and all. अच्छा, बताइए। What is this? Red Sea. What is it? अच्छा, आप आई हो कौतुक आज? Okay. What is this? Good. हाँ बताइए। What is this? नहीं, मेडिटेरियन सी नहीं है, मेडिटेरियन सी आगे है। हाँ, दिस इज ओके। वेज पर्शियन गल्फ, ये क्या होता है? ये मैप, ये ऊपर आपके हाथ में एटलस है ना? See, you have to identify 3 things: Gulf of Oman, Persian Gulf, Red Sea spot करिए, Mediterranean Sea, Strait of Hormuz, Strait of Hormuz. Identify 5 things, 1 2 3 4 5, पहले आप ये करिए, then I'll go ahead, and also identify Gulf countries. How many countries are there in Gulf? This area, this is a peninsula, right? This is a Saudi peninsula. क्या बोलेंगे आप इसको? We'll call it as Saudi peninsula.
हाँ, स्विस कैनाल भी आप देखेंगे, हम बात कर चुके हैं इस बारे में, इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलिए, डू दिस। कहाँ? उस या ये नहीं बताना है, उस या हाँ, ईरान के नीचे। गुड। सो हियर यू हैव पर्शियन गल्फ। सब ये एक्टिविटी करेंगे और नॉट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल डू दिस, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा व्हेन आई रेफर दीज टर्म्स। बताइए। ये वाली साइड क्यों नहीं बोल रहे? यू डोंट हैव मैप, गूगल देख लीजिए। हाँ, एडेन, हाँ, कहाँ पर है? नीचे या ऊपर? गुड। और सर्च करिए, आप भी सर्च करिए, यूज योर दिस फोन्स। अभी नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ये जो मैंने आपको बोले, आपको पहले ये करने हैं, दैट इज मैंडेट। मिला आप सबको? मिला आप सबको? कितने लोगों ने कर लिया एक्टिविटी? जब हो जाए, when you all know it, the places which I have written on the board thoroughly, then you let me know. ढूंढ लिया? बताइए अब एक एक करके, everyone start from the very first one and let me know. साइड में आप कंट्री से देख लेना, नेबरिंग, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, इसकी साइड में कौन कौन सी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज? ओके। और देखिए, ये आप क्या कर रहे हो ना, ये वाला जो मैप लिया है ना आपने, पॉइंट इज, तभी मैंने आई हैव टोल्ड यू, ये तो अच्छा है, हैंडी है, इट्स गुड, बट यू टेक एटलस। एटलस में यू विल बी एबल टू सी, जैसे इनके पास है, ठीक है? इसमें क्या फायदा है, आई टेल यू द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी एबल टू सी द होल पेनिनसुला। पेनिनसुला देख पा रहे हैं पूरा? आई थिंक सिलुएट तो दिख रहा होगा आपको। दिस, कैन यू सी ऑल दिस, राइट? जो इसके ऊपर वाला एरिया है, विच इज दिस, इट्स योर पर्शियन गल्फ, right? I'll show you in the PPT, right? Tomorrow, day after tomorrow, I'll bring that. But the point is, यहाँ पे आपको ये, why I'm telling you to again and again to take a atlas is because you will be able to identify. अगर इतनी छोटी से उसमें आपको दिखेगा नहीं, और फिर confusion भी होता है कि कौन सी country से they are getting having boundary or not, क्योंकि उसमें छोटे से मैप में you won't be able to identify. ठीक है? सो आई टेल यू सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, ये आपका रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई शो यू हियर वेयर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज। आप ये देख पा रहे हैं? कैन यू सी दिस, राइट? ये है नहीं? अच्छा, वही है, ओके ओके। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन गर्ल। अब बहुत लोग सोच रहे हैं इसका पर्पस क्या है मैपिंग करने का। मैपिंग करने के टू पर्पसेस हैं, दैट डायरेक्टली द क्वेश्चन कैन कम एंड आल्सो आपका क्वेश्चन गर्ल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर दे कैन आस्क यू अबाउट इन द मीन्स आंसर राइटिंग एंड आल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको यही नहीं पता होगा मिडिल ईस्ट की क्या क्या लोकेशन है, तो आप लिखेंगे क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में? हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गेटिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस? इनफ, ठीक है, राइट, दैट यू हैव टू राइट। और उन क्वेश्चंस को लिखने के लिए, समझने के लिए, हैव टू अंडरस्टैंड द होल एरिया, राइट? आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन गर्ल, दिस इज योर स्टेट ऑफ फॉर्मल्स। नाउ यू हैव टू सी दिस इज योर रेड सी, ठीक है। अब मुझे कंट्रीज बताइए, ये क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ से इस तरह से कनेक्ट होके यहाँ पे क्या है? हियर यू हैव मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे और चीजें देखेंगे, देखिए दिस इज योर स्टेट ऑफ बर्बल मंडप, ठीक है, यहाँ पे है नीचे की तरफ, इसमें नहीं दिख रहा दिस स्टेट, ठीक है। दिस इज योर राइट डाउन इफ यू वांट टू राइट। अगर आप मार्क कर रहे हैं वहां पे, डू यू हैव मैप्स? कितने लोगों के पास पहले मैप्स है, मैंने बताइए। कहाँ है? घर पे क्या कर रहा है वो? क्लास तो यहाँ चल रही है, ठीक है। देखिए ये जो नीचे वाला एरिया है आपका यूथोपिया से जो गैप है यहाँ पे, दिस इज योर बबल मंडप, ठीक है, ये वाला एरिया है, दिस वन। और ये जो आप गल्फ ऑफ एडन पूछ रहे थे, वो दिस इज योर गल्फ ऑफ एडन। डन? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आई थिंक मोस्ट ऑफ इट हैज बीन डन हियर। तो इसके नाल तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं इसमें, मतलब ये साइट की जो चीजें हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी फॉर नाउ। पहले आप ये लर्न करिए, ये समझिए, उसके बाद आई विल गो अहेड फर्दर इसी चीज के अंदर कि आपको कौन कौन सी और लोकेशंस को नोटिस करना है। पहले आप ये देख लीजिए, आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हाँ हाँ, राइट, लिख लीजिए। इफ एनीबडी वांट्स टू राइट देन दे कैन राइट, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, कौन? ये टॉकिंग अबाउट डेड सी? डेड सी है, हाँ, इसराइल और जॉर्डन के बीच में वो डेड सी है, वो लैंडलॉक्ड है। ये कहाँ? ये तो बिल्कुल ही खुला हुआ है, पैसेज इज ओपन, दिस इज नॉट लैंडलॉक्ड। क्योंकि मिडिल ईस्ट में लॉट ऑफ पीपल हैव द कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को यही सॉर्ट कर लीजिए। हो गया सबको? चल चलिए, राइट।
ठीक है, लिखिए Saudi Arabia is the largest country. First write about Saudi Arabia and then we'll come to the relations etc. Write down Saudi Arabia is the largest country. Saudi Arabia is the largest country on the Arabian Peninsula. It is the largest country on the Arabian Peninsula. ये देख रहे हैं आप, this is the largest. ये है आपका Saudi Arabia. Can you see how big it is? So can I say the maximum portion of peninsula is being taken by Saudi Arabia? Is it fair to say that? आप खुद ही देख लीजिए, right? So if the statement comes that Saudi Arabia is the biggest peninsula of Arabian Peninsula, this is true. Write down. Saudi Arabia is the largest country on the Arabian Peninsula, comma, occupying about 80%. Occupying about 80% of its total land area and is situated in Middle East and is situated in Middle East. This is your Middle East. ठीक है, next write down full stop. It is bordered by Red Sea. कहाँ पे है Red Sea? To the west. खुद ही देख लीजिए, वेस्ट की साइड है आपका रेड सी. It is bordered by Red Sea to the west. Red Sea, REDSEA, Red Sea to the west, and Persian Gulf to the east. And Persian Gulf to the east. PERSIAN, Persian Gulf to the east. इंडिया तो साउथ एशिया है. मिडिल ईस्ट इज दिस ओनली ना, ये वाला मिडिल ईस्ट. Now write down. It is bordered by Red Sea to the west, Persian Gulf to the east, comma, with land borders with Jordan, comma, Iraq, with land borders with Jordan, comma, Iraq, Kuwait, comma, Qatar, Kuwait, comma, Qatar, QATAR. That is the spelling, Qatar, QATAR. Next is United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, comma, Oman, comma, Oman, and Yemen. Emirates, comma, Oman, 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 and Yemen. ठीक है, Where is Oman? Where is Yemen? Yemen. कौन सा वाला ओमान है, कौन सा वाला येमेन है? ऊपर वाला. गुड, दिस इज योर ओमान. नीचे वाला योर येमेन. ठीक है, ओके. हाँ वो होगा, मैं तो बस इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं पीपल. I'm just, हाँ बहरीन भी है. Here it is, यहाँ पे बहुत छोटा सा है. ठीक है, दिखता नहीं है. बहरीन, BAHRAIN, बहरीन. ठीक है, ये प्रिपेयरिंग फॉर विच स्टेट एग्जाम? ठीक है, बहरीन. और कैन यू सी मोर? बताइए, अब लिखेंगे आगे. राइट डाउन. साइज, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री. हो गया. नाउ ज्योग्राफी में राइट डाउन. द टेरेन इज डाइवर्स with the vast majority being desert. The terrain is diverse with the vast majority. The terrain is diverse with the vast majority terrain is diverse with the vast majority being desert, comma, also includes mountain ranges in the west. Also includes mountain ranges in the west and southwest.
in the west and southwest. In the west and southwest. The country has no permanent rivers. The country has no permanent rivers, but has seasonal river beds. But they have seasonal river beds. River beds. Country has no permanent rivers, comma, but has seasonal river beds. और seasonal river beds को क्या कहते हैं? Wadis. 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 Seasonal river beds called wadis. आपको have you left something? Are you writing? कुछ छूट गया क्या आप लोगों का? Right? Have you missed the link between what I am saying? Anyone? No, no. Wadis. WADIS. What you are saying is different. ठीक है? Write down next significance. Its location on both the Red Sea and Persian Gulf. ये सिग्निफिकेंस है. अब देखिए जब व्हेन आई एम मेकिंग यू राइट द सिग्निफिकेंस तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए कि रेड सी कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, बिकॉज इसका जो प्लेसमेंट है दैट मेक्स इट व्हाट इम्पोर्टेंट इन जियोपॉलिटिक्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ ट्रेड जो हो रहा है विच इज हैपनिंग फ्रॉम दिस एरिया. Can you see this part? The trade is happening from here because this is your Suez Canal which is connecting your Indian Ocean, and then you are directly connected to this part, and then it has been transported to different parts of the country which is also your European country. So this trade route is very very important. When I say the critical importance, the geographical importance of this place is huge. क्यों है? Because of this reason. Do you know about other this thing civilization? पुरानी civilization like this. कौन सी civilization थी ये? किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक? आपसे इससे पहले कोई क्लास हो रही है? हाँ मैम मेसोपोटामियन. हाँ सॉरी मैम मेसोपोटामियन कल्चर सिविलाइजेशन. करेक्ट. मेसोपोटामिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ठीक है. क्यों इतना ज्यादा प्रोलिफरेटेड था? बिकॉज दे वर ऑल्सो ट्रेडिंग, और दिस ट्रेडिंग was happening because of this connection, this trade links that they had. Trade links are because of the navigable route. ये जो navigable route है ये बहुत important है. पहले how Europeans used to come, they used to go like this, ऐसे पूरा, and then they used to come here. It was such a big route. Versus, can you see this route? Which one will be more nearer? This one, na? Right? So people also not got this पहले दिन. हर कोई किसी को पहले दिन नहीं मिल गया था कि नो दिस इज द पार्ट दैट वी विल सी, या फिर ये वाला पार्ट हम पहले देख लेते हैं. ये सब कुछ हैज बीन डन बाय लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ दे हैव डन व्हाट यू कॉल इट एज इन नेविगेशन. क्या बोलते हो आप उसको? किस पे जाया करते थे? वॉयेजेस. दे यूज्ड टू गो ऑन वॉयेजेस एंड देन दे डिस्कवर्ड दिस. सिमिलरली अमेरिका वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय चांस. They were doing something else and by chance they discovered America. इसके बारे में फिर आप पढ़ना. 11th क्लास का NCERT है, ठीक है, हिस्ट्री में. Then you will understand what is this civilization is all. This is a history part. नहीं, I'm saying it's a history part. I don't have specialization in that. ठीक है. Either even if I tell you that, तो मुझे टाइमलाइंस ऐसे याद नहीं है और वो चीजें भी याद नहीं है. ठीक है. ओके. नाउ सिग्निफिकेंस लिखेंगे, ज्योग्राफी लिखेंगे, सिग्निफिकेंस लिखेंगे. इट्स लोकेशन इज ऑन बोथ द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ. हाँ, इट्स लोकेशन ऑन बोथ द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ गिव्स इट द क्रिटिकल रोल. पर्शियन गल्फ गिव्स इट अ critical role. Gives it a critical role in global maritime trade. In global
maritime trade, in global maritime trade, comma, particularly for oil shipping, particularly for oil shipping, particularly for oil shipping. ठीक है? Next point, the capital and the largest city, the capital and the largest city of Saudi Arabia is Riyadh. Is Riyadh. लिखा है बोर्ड पे. It is located in the central region of. It is located in the central region of Saudi Arabia. It is located in the central region of Saudi Arabia. It is located in the central region of Saudi Arabia. ठीक है? Done. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? How do you know Saudi Arabia? किस पर्पस से आप जानते हो Saudi Arabia को? Oil. One thing she said was oil. और बताइए. Desert और infrastructure or infrastructure in what sense? उनका tourism, okay. See, earlier what was happening, understand, earlier what was happening, Middle East, which you call it as these all countries, they were the big, even the USA was entirely dependent on the Saudi Arabia. ठीक है? They were entirely dependent on Saudi Arabia. Okay? And then when they were entirely dependent on Saudi Arabia for oil, because they were getting the cheapest oil available around them, and America also did not thought about this, that ever they have to explore their own oil and mineral resources. They were doing it fairly well. This country was dependent for their exports to these countries, your Western countries, and America was also pretty much fine that 70% of its oil requirement was being fulfilled by your other countries, Middle East countries. I'm talking majorly. I should name it Middle East rather than just Saudi Arabia, because you have a different type of what this also. The different countries are also involved in the exploration, oil exploration. ठीक है, सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, बाकी countries नहीं है. So Middle East पे वो सब कुछ dependent था. But then there happened a crisis where a monopoly or cartel was created by these Middle East countries. Cartel means groupism कर लिया, right? For example, some people group it together and they say, हमारी मर्जी से we will try to send you the oil. And the oil prices increased altogether from a very minimal price to a very high price. Okay? And that was not acceptable by Western nations. Now, Western nations wanted, they never thought of it that something like this will happen. So what they thought, they switched it, they pivot and they started exploring. Abhi bhi America is trying to explore a lot of its oil and mineral resources. In fact, it's working on other minerals, for example, shale gases also, which is found in Alaska, right? Lots of shale gas process is also very much tough, so they are still doing it. So this is what that America never thought of it, and then they went here, right? We'll discuss about this oil crisis, etc. I've just given you a glimpse कि क्या था oil crisis, कैसे वो dependent थे और कैसे उन्होंने pivot किया, अभी वो कैसे pivot कर रहे हैं. ठीक है? जब आप कार्टेल बना लेते हो किसी भी चीज का, तो क्या होता है, अब you don't want to create a monopoly in the country, in the world, right? अगर monopoly create हो जाती है तो क्या होता है, you have to be what, you have to be at a which position, at a bargaining position, or at a you will be submissive to that thing, submissive, right? So आप bargain नहीं कर पाएंगे. So Western nations also thought that we won't be in a bargaining position with them anymore. So this is what they thought of. अब आप थोड़ा सा लिखेंगे about
और किस लिए फेमस है इंडिया और मिडिल ईस्ट? Very good. 60% of India's NRI living. But for what? Which collared jobs it is? ब्लू कॉलर जॉब्स, राइट? ये डिफरेंस है, प्लीज आप इसको ध्यान में रखना कि मोर ऑफ आर ब्लू कॉलर पीपल जॉब्स, they are providing a blue collar jobs. Why? Because for the maintaining of infrastructure they need more of laborers, and from India more laborers go to that place because they are having cheap labor through the India, and that's how the trade has been done. So they do what? They send they give back what? Remuneration. Remuneration been given by the people who go from India to that place, and then they give it back to the country. कितने लोग हैं? Nurses, your laborers, right? And these people are facing some issues there also legally, because they are not feeling safe in that country. सारे जो blue collar jobs है, although the infrastructure, although the policies, social working policies, everything are much better than the different countries, but still ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही seamless है, because recently also we have seen a data in which it has come that lot of blue collar people jobs workers are facing problems there, right? They are fighting a legal battle in many of the cases, like they are not finding it safe, and also they are not provided a fair wages as compared to different counterparts. ठीक है, ये उनका challenge है. Superficially I am trying to try to get you aware of the fact कि क्या क्या यहाँ पे issues हैं. ठीक है, next is write down. Write down the heading. India, Saudi Arabia. India, Saudi Arabia relations. India, Saudi Arabia relations. Write down the strategic location of Eastern Arabia played a significant role in developing connection and relations with ancient civilization. The strategic location of Eastern Arabia played a significant role in developing connections and relations with ancient civilization throughout the ages. Full stop. Throughout the ages. Full stop. Particularly during the Bronze Age, comma, when the region became a during the Bronze Age, particularly during the Bronze Age, BRONZE, Bronze Age. And today you will do the answer writing also in the class. 8 minutes के अंदर आपको जितने भी हमारे days अभी आ रहे हैं, we will write a practice. मैंने practice करने के लिए I thought of कि in the class you will write an answer in 8 minutes. ठीक है, international relations से start करेंगे and then we will move to the different subjects also in this way. ठीक है, 8 minutes के अंदर you decide whenever you have to write, या फिर जब भी हमें लगेगा कि gap है, so we will try to inculcate this activity in the class itself, because I know a lot of you are not writing at home. Right now, comma, when a region became commercial and cultural center. When a region became commercial and cultural center, comma,
connected two great civilization, that is Harappan, and Mesopotamia. Harappan and Mesopotamia. Where was your Harappan and Indus civilization was where? Your Harappan and Mohenjo-daro in western side of India, right? Where which region? Particularly this region. यहाँ पे ये वाला region पूरा, right? इतना ही तक था. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक, कभी-कभी महाराष्ट्र तक था. You have a very famous place, Lothal, right? यहाँ पर. Then you have here राजस्थान में कालीबंगन. यहाँ पे आपका क्या है? ठीक है, कुछ प्लेसेस आपको याद है ना हड़प्पन मोहनजोदाड़ो की, right? So these are the places which I'm trying to get you familiar. Although you'll do it in a history class in detail. हाँ, मेहरगढ़, right. I'm just trying to get you familiar. अगर आपको 2-3 names भी पता है तो आपको याद आ जाएगा कि which civilization we are talking about. ठीक है, सबसे अच्छा एविडेंसेस. हाँ, एविडेंसेस अभी भी these people are researching, इतना सर्च कर रहे हैं ये लोग, एंड देन दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन था, कैसा था. हाँ, उसकी उनकी लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हो पाई. और ये भी बोलते हैं कि द वे दे सिविलाइज, देखिए उस टाइम पे इतना अच्छा प्लानिंग करना, सिटी प्लानिंग दे हैव डन इज अमेजिंग. द वे दे हैव डन द ड्रेनेज सिस्टम, उसकी बात कर रहे हैं. द वे दे हैव डन द ड्रेनेज सिस्टम, दे हैव पुट द ग्रेट बाथ्स एंड कैनरीज, किस तरह से रखा उन्होंने. एवरीथिंग वाज done without proper education, right? And the kind of a civilization that they, and क्यों फिर वो क्यों dismantle हो गया, that is also one of the question which a lot of people have. कुछ लोग तो कुछ theory है, किसी लोगों का कुछ theory है. So different theories are coming with respect to the dismantling of this civilization. But the point is, so far so this civilization has been one of the best civilization we have known till date, right? One of that was this, another was Mesopotamia, and this there was a connection between all of them. Reason being because they were dependent on the trades for the food. They were dependent because there's so many grain products, so many products that we eat today and which are grown on our domestic territory were not grown at that point of time. Reason being because the people did not have the know-how, and also they were not introduced to different crops. For example, if I talk about potato was not in India. It was something which was being, because हम trade करते थे, because people used to go from one place to another place. तो हमें क्या हुआ है, introduction हुआ है. Similarly tomatoes, right? So maximum vegetables ही थे. अभी आप जो different चीज सुनते हो, avocado, blueberries, ठीक है, ये जो हम अभी बहुत ज्यादा it's a trending lifestyle fruits जो अभी बन गए हैं आपके. टेस्ट नहीं है तभी तो उसको, मतलब सी, अगर आंवला वगैरह जैसे समथिंग, वो अगर सब कुछ हर कोई ले पाता, हर कोई उसको कंज्यूम कर पाता, इन दैट वे व्हाट वुड हैव हैपेंड, फिर तो everybody would have been healthy. The point is these are not very tasty foods, but also at the same time they are nutrient rich. They are highly nutrient rich. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, trend में, right? Avocados, and there is you make a toast also of an avocado, right? On bread. हाँ, I am not able to maintain any this thing. हाँ, अब now you can find. किसमें? एक तो now it's trending like this drink is very much in trend, matcha. Right? So people are saying, so people are saying that matcha is like you can make it at your home also, and it's very healthy rather than your cold coffees. People who love to have cold coffees, etc. It is chai, coffee is to some extent, right? It's said by one of the famous, and he's known, I would say, he's a known doctor. I do not know the term because he's a liver specialist. He has said one thing, that if you are having a coffee one time a day, it's good for your liver. It's very good for your liver, right? But ज़्यादा sugar ना हो, provided that उसमें sugar ना add करें.
नहीं है, right, नहीं है, but the point is that people who are addiction and people who are having it like once, see, everything is good provided you are taking it in a very much a limited manner. For example, if you take tea also, that is also beneficial only once, like एक बार ले लिया, दो बार, that's all, ज़्यादा नहीं, you cannot take it more than that, ठीक है. Similarly coffee, right, even I have talked to one of the person who is a nutritionist, and they have also told me that it's okay, but the point is that there is a time for it कि आपको कब क्या चीज कंज्यूम करनी है, ठीक है. हाँ, वो गलत है, वो गलत है. ब्लैक कॉफी पता है, मुझे पता है, मैंने आई सीन, पर उससे क्या, कि उसकी डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ. इफ यू आर सेइंग कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स रात को पढ़ने के लिए कॉफी लेते हैं, आई टेल यू क्या होगा पता है, इंसोम्निया, और अभी पता नहीं चलेगा, बाद में आपको ये फील होने लगेगा, राइट. इवन आई वाज फीलिंग वन थिंग, सी, I was like feeling one thing, that why I'm getting exhausted, like even if I'm taking a proper sleep, etc. Then you have to see your surroundings. What I'm finding these days that you put your Wi-Fi on and then you sleep. How many of you actually do that? सभी करते हैं. नहीं, अपने फोन का अपने साइड में, you put phones around you, you put Wi-Fi on, right, and then you sleep, right. Those ranges which are coming to you are not able to give you the proper, because radiation is there, it is totally on, and then you're not having a proper sleep. Are you getting the point? So I was just realizing this, that what is happening, if even if you're taking a sleep, then also you are not properly, you're not energetic. So that is also nutrition ही नहीं, ये सारी चीजें भी important है, ठीक है. चलिए हम कहाँ से कहाँ आ गए. हाँ, हड़प्पा से हम, we have gone to, yes. But I think it's a high time, guys, but I think it's a high time that without thinking that which is good in taste or bad in taste, you should start having this nutritious rich food. This is important, because the time, if you keep on thinking about कि क्या tasty है क्या नहीं है, then आप नहीं उसको consume कर पाओगे सही, because जितनी भी healthy चीजें वो सारी tasteless है. अगर आप देखेंगे all your, हाँ, आप उसमें आप रेसिपी बताना, we will all definitely try to have it. ठीक है, are you getting? ठीक है, we'll have a discussion, but after this, ठीक है. चलिए, so this is how, लिखिए, the kingdom of Saudi Arabia. The kingdom of Saudi Arabia is one of the India's most partners, most valued partners. Okay, is one of the India's most valued partners. Is one of the most valued partners. Hyphen, a maritime neighbor, comma, a trusted friend, and a strategic ally. A maritime neighbor, comma, a trusted friend, and a strategic ally. Next point. हाँ, उसको ally friend नहीं बोलेंगे, ally बोलेंगे. Please, strategic ally, you have to use such terms, right? Ally, ALLY. Next line, our connection is not new. Right on the next line, our connection is not new. Our connection is not new. Full stop. It is rooted in civilizational exchanges. It is rooted in civilizational exchanges.
that go back 2 centuries. That go back 2 centuries. Full stop. From ideas to trade. From ideas to trade. Comma. There has been a constant flow. There has been a constant flow between our two great nations. Our two great nations. Right. Right, and the main areas where, write down, please continue. The main areas where more meaningful, the main areas where more meaningful exchanges occurred, were science. The main areas where more meaningful exchanges occurred were science, comma, literature, comma, literature, comma, art, comma, art, comma, philosophy, comma, philosophy, comma, religion, comma, religion, comma, academics, comma, academics. Next, write down. Both the communities have a positive impact, full stop. Both the communities had a positive impact on existing cultures, okay. Both the communities had a positive impact on existing cultures and practices of their respective places. Full stop. These cultural exchanges, full stop, of their respective places. समझ में आ रहा है आप लोगों को what we are talking about? ठीक, अब क्या बोले? मैरीटाइम नेबर, ठीक है क्या आपने क्या लिखा है? कहाँ पे, कौन से, इसी पैरा की बात करें, इससे पहले वाले पैरा की? मैरीटाइम है ना? हाँ मैरीटाइम नेबर ही बोला तो अमेरिकन नेबर कैसे बोला? हाँ सोच के बोलिए. You have to speak and first you have to see your surroundings. ठीक है, ओके, चलिए. Write down. It is considered that during Abbasid period, लिखिए. It is considered, ये आप पूरे मिडिल ईस्ट में भी यूज कर सकते हैं. इंडिया मिडिल ईस्ट वाला अगर आएगा, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया मिडिल ईस्ट का भी आएगा तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, राइट, राइट डाउन.
क्या मैं तेज रखूं क्या? आप कह रहे धीरे धीरे बोलो. मीडियम पेस ना, ठीक है. ओके, राइट. It is considered during absent period. It is considered that during absent period, A B B A S I D, absent period, comma, these cultural and more specifically absent period आप पढ़ोगे, ये Arabs civilization. अभी आपने पढ़ा नहीं ना हिस्ट्री मेन्यू? हाँ, ठीक है. Absent period, comma, these cultural and more specifically intellectual changes, and more specifically intellectual changes, more intellectual change exchanges, and specifically more intellectual exchanges were at their peak. Were at their peak. Full stop. Various Abbasid emperors were personally involved in various Abbasid emperors were personally involved in translating different Indian text related to astronomy, comma, medicine, comma, literature, comma, mathematics. Medicine, comma, literature, comma, mathematics. Have you heard about this person, El-Biruni? वो उन्हीं की बात है. El-Biruni also came to India, right? They had the exchanges, like for example, they learned from our thing, we've learned from their culture. So this is how. अगर इंडिया मिडिल ईस्ट के बारे में आता है, then also you can write all. मिडिल ईस्ट क्या है? These all countries. ठीक है. So Saudi Arabia is मिडिल ईस्ट के. हम सऊदी अरेबिया के बारे में why did I tell you? Reason being because it's the biggest country in the whole area, peninsula. ठीक है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि नहीं सिर्फ ईस्ट के बारे में ही लिखना है, मिडिल ईस्ट के बारे में भी आ सकता है. सो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स, दे ऑल आर वैलिड इन दैट टू. ये हिस्ट्री में पढ़ना. ठीक है, चलिए आगे. राइट डाउन, राइट डाउन. Right now, it has also to be noted. It is also to be noted that cultural interaction between India and Arab world, cultural and it is also to be noted that cultural interactions between India and Arab world is not just limited to it not just feasible. It is also to be noted that cultural interaction between India and Arab world is not just limited to percolation of literary ideas, is not limited to the percolation of literary ideas. मतलब सिर्फ आपका they were not exchanging just about the work of their own like academics etc. उसके अलावा भी they had lot of things to exchange. Full stop. The cultural exchange had an enormous impact. The cultural exchange had an enormous impact. Had an enormous impact. The cultural exchange had an enormous impact, like many of India's, social enormous impact, like many of India's social reform movement. Social reform movement. Social reform movement. बस इतना ही लिखवा दिया, अब मैं नोट से दूंगी. हाँ बोलिए. Apart from literature, it is coming out of literature.
कल्चरल है, ट्रेड है, बहुत चीजें है. People to people, they are coming and going here and there. Now your task is to see all the neighboring countries and tell me that where it is. अच्छा, आप लोगों को ये पता है who is owning, like for example सऊदी अरेबिया के हेड, ये सब प्रिंस जो है, नो, सर्च करिए उनके बारे में, that who all are owning all this, because ये जो नॉलेज है ये आपको खुद ही होना चाहिए. सलमान, यस करेक्ट. हाँ, तो ये चीज आपको, कौन सी गवर्नमेंट है वहां पे? monarch, right? So ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, despite our countries following the democracy, their countries following monarchy, how we are having a good relationship despite the fundamentals, like for example the kind of a government that we are following in both the country, the type of the government is different, right? जो हमारा form है, which is your democracy, theirs is monarchy. So how they are being able to maintain a trade relation despite of that? So what will you write in this? What are your views? बताइए. हम्म. What are your views? कितने लोग समझते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ए मोनार्क? व्हाट इज द डिफरेंस? सब लोग समझते हैं ना? व्हाट इज द डिफरेंस? तो टेल मी हाउ दे आर एबल टू मेंटेन. हाँ. हाँ, लीनियज के हिसाब से आते हैं, बट हाउ दे आर बीन एबल टू मेंटेन दैट रिलेशन डिस्पाइट हैविंग सच अ डिफरेंस? हम्म. 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 उसके अलावा और क्या? हम्म. So, are you trying to say that the more of stability is there in that country? They're having a good infrastructure. They're having good laws. Good is subjective. Cannot say good laws. I can say that the decorum, yes, stable laws, right? Safety, right? So how you will try to portray it? Hmm. 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 Mm-hmm. Hmm. Hmm. So you have to write that in 8 minutes. Abhi, write down this question. Question आपको समझ में आ गया? I guess everyone. That despite the form of the governments of India and the Middle East are different, the trade relations with them has been cordial. Comment. 8 minutes के अंदर I am putting a timer, और आपको 8 minutes के अंदर I am telling you what is the time right now. It's 10:37. Exactly after 8 I'll say stop. Write down. Despite the countries are having, like India and Middle East, the countries are having different form of governments, are having different form of government, comma, they share cordial relations. They share cordial relations. Explain. They share cordial relations. Comment, you explain. Start हो गया time. 8 minutes.
46 पे आपको you have to stop. कुछ भी लिखो. Don't forget to write conclusion.
2 minutes left. सॉरी, इसमें कोई लीवे नहीं है. Okay, time's up. Up, time's up. Stop writing, everyone. Stop writing. I said stop writing. Stop writing. Stop writing. Stop writing. Stop writing. कितना लिखा आप लोगों ने? दिखाइए, शो में. हाँ, I'll see each. कोई बात नहीं, मैम. Don't have to. Have you just check the structure? Not acceptable. सिर्फ इंट्रो तक. Not acceptable. वर्क करना पड़ेगा. इस ऐसी नोटबुक लेकर आया कर. तो फिर मेरे नोट्स कैसे मेंटेन करोगे? अच्छा, बनाते हो. ठीक है, ठीक है. ओके. You have to improve your handwriting and also intro थोड़ा सा छोटा, मतलब छोटा in sense you have to improve your handwriting first. Structuring में I'll tell you in the class. Good. Good. इतनी सी क्लास में you are able to write and structure it well. That's good. Show me yours. ऐसे. Structuring तो है. That is good. Meanwhile, you were able to add that data, etc. ठीक है. What's her name? Anjali. Sakshi. Good handwriting. Very nice. कोई बात. Good handwriting and also good this thing. But it is readable. It is good. ठीक है. Nice. बस थोड़ा आगे जब लिखोगे फिर start writing in the points and then body पूरा लिखने, जैसे headings डालने ना, defense का अलग, you will write military का अलग, for example your culture exchanges अलग, then your all this thing, your trade which is happening is different, economic ties etc, diplomacy जो आपका people are going there, so what do you call that as your diaspora. ठीक है, diaspora का अलग, तो उस तरह से फिर लिखना, फिर conclusion. ठीक है. The only thing is that you are not able to write lot in the short time. डेटा ऐड किया है. ठीक है, गुड.
डेटा ऐड किया which is good. हाँ ये सच है, हाँ. $20 का ये हाँ. कॉर्पोरेशन ये वाला, This is good. ये वाला भी Area of comprehensive corporation is trade investment is fine. Good. Strategic Conclusion. security. ऐसे जैसे ये इन्होंने लिखा है ना, थिंग इज दैट ये इस तरह से ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग, एनर्जी सिक्योरिटी अलग, एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन, दिस हेडिंग्स. इंट्रो इज गुड. बाकी स्टूडेंट्स नहीं है ना, लेट देम जस्ट आई जस्ट बिकॉज आपको मैंने अलग से बाहर बिठाकर 1 hour आई हैव चेक योर आंसर, बट ऑफ दीज पीपल आई हैव नॉट डन इवन वंस, क्योंकि हाँ, बिकॉज these people are also part of the class. ऐसे नहीं लिखना. I'll tell you in the class how you have to write. Although good, हाँ ये बिल्कुल फर्स्ट है आपका, इससे पहले कोई भी क्लास नहीं हुआ है, ठीक है. For the first time, मेरी अपने चलेगी. For the first time, it's good. Very nice the way you've written. बट आपको स्ट्रक्चरिंग करनी होगा, मतलब स्ट्रक्चरिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है क्लास के अंदर. शो मी योर्स. Handwriting first of all, intro, and then you have to give the headings, sub headings. जैसे ट्रेड रिलेशन, आपने इंडिया जापान का भी लिखा है. Why you have not made it? तो जितना भी है you would have given to me. Good. इसके ही देख लेते हैं. शो मी. देखिए इंडिया जापान का you have written. Now you have to write what? जैसे आपने लिखा है, try to give a heading here और उसको कैटेगराइज करिए, ठीक है. फिर यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, फिर कैटेगराइज करेंगे. हाँ, हेडिंग रखिएगी तो आपको समझ जाएगा, अच्छा दिस टॉपिक इज अबाउट दिस, वट एवर यू आर राइटिंग इज अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिलेशंस, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन या डिफेंस टाइज, तो इस तरह से इकोनॉमिक टाइज, सो इट विल कम लाइक दैट. देन यू विल राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो विद दिस, ठीक है. और बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स में लिखिए, इसको 2 में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बेटर होगा. हाँ क्या, सिंगल लाइन एंड 2, 3, 4 सब हेडिंग्स आप दिखाइए. देखिए यू आर राइटिंग दैट इज गुड फॉर अटेम्प्ट, बट जल्दी, बट पॉइंट इज आपको इस तरह से लिखना है. यू हैव टू राइट द पैरा, देन यू हैव टू राइट सब हेडिंग. यू सी द एग्जांपल ऑफ दिस पर्सन श्वेता, ठीक है. आप श्वेता का एक बार देखिए. श्वेता गिव मी योर दिस, इस तरह से यू हैव टू राइट, दैट इज आइडियल. क्यों, why you have not written? देखो this he is having a first class, then also he is written, है ना. कितना लिखा, अच्छा थोड़ा तो लिखा है, इतना ही काफी है. दिखाइए. Writing is fine, but the point is that you have to write an intro first. All of you, Q4, will see how she has written, and then try to take यहाँ पे intro, then you write a body, then you will write a conclusion. हाँ, please discuss, ठीक है. Show me yours. आइडिया नहीं है, ये आपने लिखा है इतना बड़ा बड़ा. ये गुड फॉर राइटिंग सो मच, बट पॉइंट इज यू हैव टू राइट इन लाइक दिस थिंग. फर्स्ट पैरा, देन यू हैव टू राइट इंट्रो. यू शुड हैव अ डिस्टिंक्शन, जैसे यहाँ पे आपने इंट्रो लिखा है, फिर यू शुड हैव अ डिस्टिंक्शन, फिर यहाँ पे गैप छोड़ के, फिर यू शुड राइट देयर, फिर गैप छोड़ के, लाइक दैट. अब ये क्या है, दिस इज नॉट रीडेबल. पॉइंट इज दिस, अगर रीडेबल नहीं है, हाँ नहीं, शी इज नॉट हैविंग फर्स्ट क्लास ना, रीडेबल नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है. व्हाट्स योर गुड नेम? प्रिया. आपको कैसे लिखना है, आई टेल यू दिस थिंग. फर्स्ट यू राइट इंट्रो, एंड देन इंट्रो इतना लिख लिया आपने, डेटा एक्सेट्रा व्हाटएवर यू हैव टू राइट, देन यू विल राइट. यहाँ पे आपने हेडिंग डाली पहला, जैसे इकोनॉमिक टाइज, एंड देन यू विल राइट सब पॉइंट्स अंडर इट 1, 2, 3, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर सब पॉइंट्स 1, 2, 3, फिर हेडिंग 1, 2, 3 जो भी है आपका, देन यू विल राइट. ये आपने लिख लिया, एग्जांपल्स लिख लिया, ठीक है. कंक्लूजन. क्यों ऐसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था वे फॉरवर्ड लिखना. यहाँ पे आप लिख सकते थे व्हाट अहेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या, व्हाट दे सी,
ahead. Not able to write because I have to stand and this is low in level, right? Okay, everyone, I think online students have also written. ठीक है, अब ये एक्टिविटी देखिए, so many classes you have done with me and if you are not able to write a good answer, I'm not saying good is subjective all the time, again I'm saying this, जरूरी नहीं है कि जो आपको सही लगे वो बाकियों को सही लगे, but the point is good is means at least you know कि structuring कैसे करनी है, तो फिर फायदा नहीं है ना, there is no use of the class then, ठीक है, because international relation is something I told you that will come in your spotting your places and also is helpful in writing, even if you are not able to write then there is no use. So going forward, daily I'll do this activity in the class. 8 minutes you have to write the answer. Now how you have to improve, that is your thing. मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग भी बताया है, बाकी क्योंकि स्ट्रक्चरिंग तो सारे सभी सब्जेक्ट्स का सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चरिंग विल नॉट चेंज, बट किस तरह से आप उसको चेंज करते हैं, किस तरह से आप अपने पॉइंट्स उसके अंदर डालते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, और ये मैं अब आई स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस. देखिए फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करने हैं, आपने अगर 3 भी फैक्ट्स है ना आपके पास फॉर वन आंसर, दैट इज मोर देन इनफ. स्टार्ट करेंगे आप कोई भी आंसर विद कोट, या कोई भी किसी ने कुछ बोला, या फिर कोई डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है आपके पास फ्रॉम अ गुड सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स, आप उसको लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, ताकि पीपल कैन चेक द डेटा इफ दे वांट टू. ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन होता है, यू वांट टू गिव टू द पीपल दैट द डेटा व्हिच आई हैव रिटन इज fine, like it's not there is no discrepancy in the data, there is no problem in the data, I'm not manipulating it. ठीक है, आपने कोड करा, डेटा लिखा, फिर यू स्टार्ट राइटिंग द इंट्रो, फिर इंट्रो के बाद यू स्टार्ट राइटिंग योर हेडिंग. आई एम नॉट गेटिंग अ फ्री स्लाइड हियर, कोई है क्या फ्री स्लाइड? इट्स अ स्लाइड यहीं पे ऐड कर देते, ठीक है. देखिए क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, इंट्रोडक्शन में मतलब you don't have to write introduction literally, I'm just telling the intro part. Then you start writing, you start data से आपने कोई data या फिर कोई भी आपका quote, you started then writing it like this, ठीक है. जैसे सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट फॉर एग्जांपल, कुछ भी आपको लिखना है, and India relations, and then you will give the background, ठीक है. अब इसके अंदर बॉडी में आप you will start writing the headings, जैसे कल्चरल टाइज, फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी कल्चरल टाइज. उस अगर कल्चरल टाइज लिखेंगे तो यू राइट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन राइट द सब हेडिंग्स, सब पॉइंट्स दैट कल्चरल टाइज बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसे आपने लिख दिया. फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक और ट्रेड एक्सचेंजेस या इकोनॉमिक टाइज, देन सब पॉइंट्स, फिर आपने लिख दिया सिक्योरिटी, कॉर्पोरेशन, फिर आपका वे forward, what do you think, what is the way ahead, like what is there going to be their partnership, आगे क्या क्या सोच रहे हैं, ग्रीन क्लाइमेट पार्टनरशिप, क्योंकि ये दिस इज द फ्यूचर, तो आर दे पार्टिसिपेटिंग, यस. फिर आप क्या लिखोगे, मिडल ईस्ट, अभी रिसेंटली कहाँ हुआ था कॉप आपका, यूएई में भी हुआ है आपका कॉप, कॉप 27, तो यू विल राइट कि उन्होंने किस कैसे उसमें दे हैव पार्टिसिपेटेड. क्यों आपको लिखना है ग्रीन पार्ट, क्योंकि ये आपका दिस विल बी वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ योर टाइज विद देम. ग्रीन पार्टनरशिप में आप भी एक्टिव, इंडिया इज आल्सो एक्टिव, मिडिल ईस्ट इज आल्सो एक्टिव, सो दे विल हैव अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है. तो ग्रीन पार्टनरशिप आपका, आप फ्यूचर देखते हैं इसके अंदर, are your people who are going for the blue collar opportunity, blue collar jobs are going to be there, so they are going to go there also. अभी आप कौन सा कॉरिडोर बना रहे हैं, दैट कॉरिडोर दैट यू आर मेकिंग IMEC, उसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. IMEC कॉरिडोर कहाँ पे हुआ था ये फाइनलाइज, इन G20, वेयर दिस हैपन, G20 इन इंडिया, सितंबर में हुआ था 2023 24 में, नो 23 में, ठीक है.
ठीक है, दिल्ली में हुआ था योर कॉरिडोर। नेक्स्ट, और बताइए और किस चीज के लिए हम डिपेंडेंट है वहाँ पे? हाँ, ट्रेडिंग पार्टनर, वेरी गुड। बिकॉज दिस इज, आप फ्यूचर के लिए कैसे लिखेंगे? विद द नंबर्स एज प्रेडिक्टेड बाय दिस, फॉर एग्जांपल WTO, this number with the trade partnership with them is going to increase. ठीक है, so you can write like this also. Is going to increase by, for example, this much percentage. करेक्ट, ऐसे पॉइंट्स यही जो ये बता रहे हैं। हाँ, CNG LPG, बट पॉइंट इज हम ग्रीन पार्टनरशिप पे, एंड योर दिस आल्सो दे अभी दे हैव विजिटेड, राइट, द पार्टनरशिप, एंड आल्सो यू हैव टू राइट दैट रिसेंटली योर दिस पार्ट योर प्राइम मिनिस्टर हैव मेट द हेड ऑफ द स्टेट्स, राइट, फॉर व्हाट पर्पस, आप वो भी लिख सकते हो, रिसेंटली दे हैव मेट। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए सिर्फ सुपरफिशियली, अभी तो वी हैव नॉट इवन डन द टॉपिक वेल। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, फिर कंक्लूजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कैसे लिख, कुछ समझ में आया आपको? आया, फर्स्ट क्लास है आपका, किस तरह से लिखना है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब आई डोंट वांट टू सी दैट लाइन एंड यू आर गिविंग द रेफरेंस, कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, हेडिंग्स बना के, सोनू यू हैव टू आल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब प्रैग्मेटिक कोई पर्सन है, क्या होता है मतलब? रीजनेबल पर्सन इज रीजनेबल, मतलब रीजनिंग, नॉट रीजनेबल मतलब रीजनिंग वाला, लॉजिकल, लॉजिकल वाला प्रैग्मेटिक। ठीक है, दैट इज वो रीजनिंग है, लॉजिकल है, रैशनल है, प्रैग्मेटिक है, एक ही तरह से यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच क्लास। बोलिए मैम। यस मैम मैम यस राज, इंडो चाइना का मैम वो पीपीटी अपलोड नहीं हुआ है। हाँ हाँ, that's what I've discussed in the class initially only, that it will be uploaded because they that have gone for the alignment. एक बार अलाइन करके आ जाओ, then I'll share it with you. I have not got it from the DTP department. Once they'll share it with me, I'll share it with you. I've sent them already. My work is done on. I did it on Saturday itself. ठीक है? Alright. कितने लोगों ने जापान इंडिया वाला पढ़ लिया है? इंडिया जापान thoroughly. To be honest, no lies. India Japan PPT. How many of you have actually gone through? प्रिंटआउट्स नहीं, वैसे भी अगर PDF किसी ने पढ़ा है तो पढ़ा, आपने पढ़ा? पढ़ो प्लीज, because I am here only, you can discuss it with me. All of you have got it now? क्यों? I have shared it already in the class also. I've shared. Got it now? अभी आप शेयर करिए, उनको नहीं मिला है तो प्लीज कोई एनीवन, आपको मिला है इंडिया जापान का PPT? गौतम, यस, शेयर इट विद सोनू। ठीक है, थैंक यू क्लास। You will get of India China, India Russia. ठीक है, दोनों को I have sent it for the alignment. Thank you so much.